See, example of affirmation is certainly. You have to, again I will say, you have to understand कि ये certainly word जहां यूज हो रहा है वो affirmation है, अगर वो किसी सेंटेंस के ट्रूथ होने का सबूत दे रहा है. दिस certainly word is giving justification for a sentence to be positive or true, then this will be called as adverb of affirmation. Clear? Yes, ma'am. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई वर्ड कहां पर कैसे यूज हो रहा है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये कौन सा एडवर्ब है. सर्टेनली कैन बी यूज्ड एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, but you have to really pay attention to the meaning of the sentence कि sentence बोलना क्या चाह रहा है, because in some sentences the word certainly can be used as adverb of frequency also, but जब affirmation में वो use होगा so आपको वो clearly समझ आएगा. See, देखो, I will give you an example like I will certainly help you with your project. See, there is a example. See, this supports the word help. ये support कर रहा है कि that I would certainly help you with your project. ये कोई frequency नहीं बता रहा है कि मैं आपको इतना करूंगा, या कोई आपको टाइम पीरियड नहीं बता रहा है. दिस इज कन्फर्मिंग और दिस इज एफर्मिंग. सो इसको एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन यहां पर बोल सकते हैं. समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से आया? इज देयर एनी डाउट? प्लीज आस्क मी. See, definitely एक verb होगा, sorry, एक adverb होगा. Then surely, indeed, वो words जो किसी चीज के confirmation पे emphasize डालें. जैसे I will give you one more sentence. इट इज अ ब्यूटिफुल डे एक सेंटेंस था, इसमें भी हमें पता चल रहा है दैट इट इज अ ब्यूटिफुल डे. सी, नाउ रीड द सेकंड सेंटेंस. व्हाट इज द सेकंड सेंटेंस सेइंग? It is indeed a beautiful day. इट इज इंडीड अ ब्यूटिफुल डे. सो जो वर्ड इंडीड है वो क्या कर रहा है, इस सेंटेंस पे एम्फसाइज कर रहा है दैट दिस सेंटेंस इज ट्रू, बट इसको और एम्फसाइज करके ट्रू बता रहा है. समझ आया? Yes, ma'am. क्लियर हुआ? Ma'am, can you give some more examples? हाँ हाँ बेटा, आई कैन. अभी मैं सिर्फ एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन वाले एग्जांपल्स देती हूँ. Okay, ma'am. यू आर राइट. हमने ये सेंटेंस बोला, यू आर राइट. नाउ रीड दिस सेंटेंस. You are absolutely right. You are absolutely right.
तो ये वर्ड जो है ये एफर्म कर रहा है, ये कंफर्मेशन दे रहा है इस पॉजिटिव सेंटेंस पे, इम्फेसाइज डाल रहा है दैट यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। Yeah. अंडरस्टूड? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ये एब्सोल्युटली वर्ड इस सेंटेंस को बेटर बना रहा है, इस पे और इम्फेसिस डाल रहा है, ठीक है? Yeah, इफ यू ma'am. से यू आर राइट उसका उतना एम्फेसिस नहीं होगा, व्हेन यू विल से यू आर एब्सोल्युटली राइट तो इसका स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होगा ना। Yeah, ma'am. So this is what words of adverb of affirmation do. He is coming to the party. ये सेंटेंस ट्रू था, Yeah. एक नॉर्मल प्रॉपर यस पॉजिटिव सेंटेंस था, राइट? शी इज कमिंग टू Yes. द पार्टी, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है ना। Yeah, ma'am. इस पॉजिटिव सेंटेंस पे और एम्फेसाइज डाला इस वर्ड ने, डेफिनेटली वर्ड ने और एम्फेसाइज डाला दैट शी इज डेफिनेटली कमिंग टू द पार्टी। सो दिस इज ऑल्सो एन एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। क्लियर? Yeah, ma'am. Yes, Is there still any doubt? Please clear that also and don't get confused. No, ma'am. Okay, now moving on to adverb of negation. जो स्टेटमेंट को डिनाई करने के लिए, स्ट्रांगली डिनाई या स्ट्रांगली अपनी डिनायल पुट करने के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट में वो वर्ड्स यूज होते हैं, तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नॉट हो गया, नेवर हो गया, या नो, हार्डली, बेरली। आपको समझ आ जाएगा जहां पर भी सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग को स्ट्रांगली एम्फेसाइज किया जाएगा, दोज एडवर्ब्स विल बी एडवर्ब ऑफ नेगेशन। Yeah, ma'am. सी एग्जाम्पल में यू कैन राइट this denies a statement, so not is a एडवर्ब ऑफ नेगेशन, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट को डिनाई कर रहा है। Yeah, ma'am. What happened? Are you all not well? No, ma'am. ma'am. He never lies to his parents. Ma'am, never. Never is Yes, an ma'am. adverb of negation. Very good. Never is an adverb of negation. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये स्टेटमेंट को डिनाई कर रहा है दैट नो ही नेवर लाइज टू हिज पेरेंट्स। Yes, ma'am. He never lies to his parents. हाँ, अब हार्डली
हार्डली का भी आई कैन टेल यू एन एग्जाम्पल. I hardly know anything about him. इसमें hardly का मतलब है that I near to about no, मतलब मैं almost नहीं जानता हूँ. Almost not at all, इसका क्या मतलब है? मैम Almost. एडवर्ब ऑफ नेगेशन. हाँ, adverb of negation, because ये almost not at all. हार्डली का ये मतलब हुआ बिकॉज मैं आई ऑलमोस्ट डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम. That is what hardly means. He is denying that I don't know anything about him. That is why it is adverb of negation. So adverb of affirmation and adverb of negation clear हो गया. If अगर नहीं आ रहा है समझ, बहुत आपको वो लग रहा है कि you will get confused, you just learn these words. But learning will have consequences because आप mix up, jumbled up कर दोगे. जहां पर certainly में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आएगा, वहां पर आप एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन नेगेशन लगा दोगे. इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस फर्स्ट, दैट ये वर्ड क्यों यूज हो रहा है यहाँ पर, एंड देन राइट व्हाट टाइप ऑफ Yeah. सेंटेंस. अंडरस्टूड? यस मैम. Yeah, ma'am. Okay, then what is the next type of sentence that we have? Next type of मैम adverb? हाँ, मैम एडवर्ब ऑफ रीजन. adverb of reason. Okay. Adverb of reason. What is adverb of reason? मैम टू गिव रीजन दैट व्हाई शुड वी डू और व्हाट. अभी तक हमारे सारे क्वेश्चन आंसर हो गए थे. हाउ मच, व्हाई, सॉरी, हाउ मच, व्हेन, वेयर, ये सारे वाले क्वेश्चन आंसर हो गए ना. Yeah. यस मैम. अब एक क्वेश्चन बचा है, दैट व्हाई. क्यों कोई चीज हो रही है, टेल्स अस व्हाई द एक्शन हैज टेकन प्लेस. क्लियर? Yes, ma'am. सिंपली ये क्वेश्चन आंसर करता है दैट व्हाई डिड दिस हैपन, क्यों कोई चीज हुई है, व्हाई हैव दिस हैपेंड. वो सारे जो क्वेश्चन आंसर करते हैं वो वर्ड्स, कौन से वर्ड्स करते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन. सी, बिकॉज, देयरफॉर, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि कोई चीज क्यों हुई है.
See, he did not study, therefore he failed the exam. He did not study, therefore he failed the exam. वो नहीं पढ़ा, that is why he failed the exam. Therefore word हमें क्यों बता रहा है कि वो क्यों फेल हुआ था? Because he did not study, right? Yes, ma'am. Therefore word tells us that he failed the exam because he did not study. So therefore is the word जो हमें बताता है that why an action has taken place. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Srishti, is there any problem? You can ask. Ma'am. Okay. स्कूटी से वहां गई हैं, क्या बोलते हैं? अरे वो See, the roads were flooded, hence the school was closed. Why was the school closed? Because the roads were flooded. Yes, Anju Lata, what is your name, child? Switch on your camera. Anju Lata. Anju Lata, please switch on your camera. Have you understood adverb of reason क्या होते हैं? वो words जो हमें बताते हैं कि कोई action क्यों हो रहा है. Why has that action taken place? Like he did not study. Why did he not study? Because He failed. Sorry. He failed the exam. Why did he fail the exam? he did not study. Because he did not study. So it answers the question why. वो क्यों fail हुआ? So the words that answer the question why are known as adverb of reason. Clear? Yeah, ma'am. Yes. Can I give one example? Yes, you can. There was no network, therefore he was not able to take his class. Huh? Ma'am, there was no network, therefore he was not able to take his class. Huh. Correct. Ma'am, can I give example? Yes. Ma'am, I didn't do homework because my notebook was wet. Huh. I could not complete my homework because my notebook was wet. Huh. Correct. Any Ma'am, other can example? Anju Lata, who are you, beta? Tell your name. Switch on your camera. Sudiksha joining from different names. And so late. What will I teach you in half an hour? मैम वो अभी हमारा पूरे दिन से बारिश हुई थी तो लाइट नहीं थी घर पे इसलिए वो ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास. Okay. Ma'am, can you give an example of thus? You can. Thus nahi, thus. Thus, ma'am, can you give? I didn't understand about Acha.
See, she worked extremely hard and thus won the gold medal. So, why did she won the gold medal? Because she worked very hard. So, उसका जो working hard वाला था, she worked hard and that is why she won the gold medal is denoted by the word does. Adverb of reason हो गया does. ठीक है? Yeah, ma'am. सी does का मतलब आप एक तरह से इस तरह समझ सकते हो that as a result. इसका does का मतलब ऐसे होगा as a result. देखो, she worked extremely hard and as the result she won the gold medal. As a result उसको क्या मिला? उसने बहुत हार्ड वर्क किया और उसके रिजल्ट में उसको क्या मिला? गोल्ड मेडल. सो does का मतलब ये होता है. ठीक है? Yeah, ma'am. मैम वन मतलब हाँ, मैम वन मतलब वन मीन्स जीत जाना. विन का थर्ड फॉर्म होता है वन. विन का थर्ड पार्टिसिपल होता है वन. पास्ट वाला फॉर्म होता है वन. जीतना. वॉन जिसे आप लोग बोलते होगे, वॉन बोलते हो क्या आप लोग? यस ही मैम. वॉन द मैच, नहीं ही वन द मैच होगा. We won वॉन the इज द match. करेक्ट इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन. Ma'am, we say won. See, he did not practice, thus he lost the match. उसने प्रैक्टिस नहीं करी, उसका रिजल्ट उसको क्या मिला? दैट ही लॉस्ट द मैच. सो दस इज डिनोटिंग दैट कि ही डिड नॉट प्रैक्टिस, दैट इज व्हाई ही लॉस्ट द मैच. क्लियर? Above Yes. negation. क्या? Ma'am, this is adverb of negation. This sentence. हाँ, this word can be adverb of negation, not can be adverb of negation. Okay, ma'am. बट दिस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ नेगेशन भी है और एडवर्ब ऑफ रीजन भी है. ओके, सो आई थिंक रीजन और एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन ये दोनों क्लियर होगा. Yes, ma'am. ओके.
Ma'am, after back you have written X. What you have written? Excitedly. Have you all read the question? Can I raise the question now? Yes, ma'am. Identify the adverb and write the type of adverb. You have to identify the adverb in the sentence and write the type of the adverb. Giving you 5 minutes to solve all these questions and give me the correct answer. First, write all the answer and then answer. So, Diksha, you can also try. I know you have not attended the class properly, but you can also try. जितना आ रहा है उतना आप try कर सकते हो. So, Diksha, are you here listening to me? So, Diksha, rejoin the meeting. Leave and rejoin the meeting if you cannot see me. Write all the answers and then tell me, okay?
मैम इसमें क्या करना है? तो दीक्षा यू हैव टू बेटा एडवर्ब इसमें फाइंड करने हैं सेंटेंसेस में, और एडवर्ब का टाइप बताना है कि ये कौन से टाइप का एडवर्ब है। आई नो आपने क्लास पूरी तो करी नहीं है, आपको इतना नहीं पता होगा, बट जितना आपको आ रहा है यू आंसर मी उतना ही, ठीक है। यस मैम। Done, ma'am.
Okay, Arohi, are you done? Have you No, done? ma'am. Okay, quickly do and then tell me. Yes. Done, ma'am. Okay. Ma'am, I didn't understand the second and fifth one. We searched for water everywhere. That is water. We searched for water everywhere. And which one? Fifth one. Yes, ma'am. My uncle will arrive from Delhi tomorrow. This is the sentence. What have you not understood in this? Ma'am, complete. Okay. Chalo. What about the first one? Answer for the first one. Trushti, you answer for the first one. Ma'am, adverb of manner. Which word? Tell me first, tell me the adverb present in the sentence and then tell me the type. Ma'am, excitedly. Excitedly is adverb of manner. Adverb of manner, I am writing it like this. Okay. Excitedly is adverb of manner. Correct. Okay. Then second one. Ma'am, everywhere, which is adverb of No, place. not you. So Diksha, you answer for the second one. We search for water everywhere. इसमें adverb कौन सा है? We searched for water everywhere. Arohi, you answer. Ma'am, I didn't do second one and Answer the fifth one. answer the third one. Chalo. Ma'am, adverb is rarely. Rarely. Ha. Rarely is what or adverb? Adverb of frequency. Very good. Rarely is adverb of frequency. Uh, मैम और सेकंड का एवरीवेयर था. हाँ, everywhere कौन सा adverb होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस. Yes. Yeah, ma'am. हाँ, so first वाला adverb of manner है excitedly. Second वाला we searched for water everywhere is adverb of place. Then he rarely forgets his
forgets to do his homework is adverb of frequency. ये क्या question answer करता है? That how often does he forgets to do his homework? He rarely forgets. Now, the tea is too hot to drink right now. Can I tell? Yes, you can. Ma'am, it will be right now. Yeah, ma'am. Ma'am, can I? How, Arohi, you can answer. Adverb is to, adjective of degree. Very good. To, that is adverb of degree. And ma'am, right now is right now also adverb of time. Now can be the adverb of time. Okay. Okay. So, what about the fifth one? Ma'am, tomorrow adverb Ma'am, of tomorrow. Tomorrow. Adverb of time. time. Sixth one. It has been raining. Therefore, the cricket match was cancelled. It has been. Huh? Ma'am, therefore, adverb of reason. Very good. Okay. Yeah. She will certainly pass the entrance exam. Ma'am, certainly, adverb of Certainly. affirmation. Certainly, adverb of Affirmation. affirmation. Very good. I never watch horror movies. Ma'am, Ma'am, never. adverb of Adjective of negation. negation. Never, Never. adverb of negation. Negation. Very good. You all have understood. So Diksha, you just have to revise, or my recorded classes will be forwarded to you. Watch the class and please from tomorrow join the class on time. नहीं तो आप daily classes miss करते रहोगे. Okay. So if adverb clear to all of you? Yeah, ma'am. Now what do you want to study tomorrow? नहीं हो रही है.